हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज था क्लास 10th का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर। सो हमारे पास है सेट 2। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग इन सोसाइटीज इन लाइन विद सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर होगा इनएग्जॉस्टिबल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, there is a decline since 1990, so there is worrying trend in how children approach the problem solving. Question number fifth, creativity is thus a social process. Question number six, in science and technology. Question number seven, knowledge work. And question number eight, with optimism. So आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ का पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कंज्यूमर्स आर कन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसा वर्ड मुझको कोई मिला नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा वर्ड लग रहा हो कि उसमें लिखा जा सके तो आप उसको लिख सकते हैं। वैसे पैराग्राफ 2 में मुझको ऐसा कोई वर्ड मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, रिटेल असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, मार्केटिंग ट्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, रिटेल असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंट अप्रोच टू रिवोल्यूशनाइज कंज्यूमर चॉइसेस इज टू क्यूरेट एंड लिमिट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, द राइटर बिलीव्स that the global product abundance cannot be equitable because creators prioritize wealthier consumers। इसके साथ आपको रीज़न भी लिखना था, तो आप इसके हिसाब से कोई भी एक रीज़न लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लीड टू फिल्टर बबल्स। फर्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स टू लिमिट चॉइसेस, एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मीन्स बॉम्बार्ड विद द टू मनी चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। सो अब आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, so the correct word will be burning. As I entered the room, the first thing that struck me as odd was the candle still burning. Question number 2, the error was concerning and the correction is concerned. Question number 3, a mask is used to hide the identity of a person. Question number 4, the correct option will be D, had come. Question number 5, the error is allowed and the correction is allowed. Question number 6, the shopkeeper asked Ramesh which book did he want. Ramesh replied that he wanted a reference book for physics which he could use for his project work. Question number 7, which. Question number 8, option number C, many. Question number 9, the city planner said that the new park was the result of several months of research and planning. Question number 10, answer number B, he swore that he had not stolen the bag. Question number 11, the correct option is D, error is view and the correction is views. Question number 12, the answer is A, very few and some. सो राइटिंग सेक्शन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6A फर्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन्स बिलो हैव ऑन द स्पीकर। द स्पीकर इज डीपली मूव्ड एंड इंस्पायर्ड बाय विटनेसिंग सच सेल्फलेसनेस एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू ओवरकम फियर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डज ट्रू करेज entail? How does this perspective differ from a common misconception about courage? So the true courage is the ability to overcome fear, and it means being fearless. True courage recognizes fear but refuses to be controlled by it. Question number 4, impossible to understand. So here we have the second paragraph. So B first, the answer is A, joyous. Second, for as a stable future, their work is valued and rely on a steady income. Question number 3, nobility. Fourth, my heart sang means sudden feeling of disappointment, and my spirits rose is the opposite of my heart sang, that means sudden feeling of happiness. Question number 7, question number first, the metaphorical expression in the line is the trees are stumbling forward into the night. Question number 2, based on the tone, discuss how adrenaline represents the conflict between man and nature. So here we can read the paragraph. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward. So in this paragraph there is a conflict that the man is whispering all the sounds of the tree, and the glasses are breaking and the trees are moving. So this is how there is a conflict between man and nature. Question number 3, the option number is B, airy and foreboding. Question number 4, why would the whispers be silent tomorrow? Because it can be that conflict between nature and man is resolved now. So now the part B.
Question number first. Amanda sulked and became moody because she feels nagged and controlled. Question number two. What does the girl constantly Ian found? What do you pattern about Amanda from the poem? She longs for a peaceful and solitary existence. Question number third. Peace and solitude. Question number fourth. Option number A. 1, 2, 4. Thank you and Jai Hind. Hope so you have done all the questions correctly, and you can go through the next video for another set. Thank you and Jai Hind.